हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड द अनसीन। In past, we have tried simplifying SQL. For now, it's time to start the second phase of our data science journey, where we'll make Excel easy and fun. Whether you're a beginner or looking to sharpen your skills, this series has something for everyone. So let's start with the fundamentals, which are ribbons and functions in Excel. Or before jumping into ribbons and functions, let's quickly see what all we will cover in this series. We'll start with ribbon overview, wherein we'll understand each uh, tabs within Excel and what they can help with. Then we'll jump on to understanding how you can make your analysis done using aggregation functions, logical functions, lookups, and other stuff. Then we'll jump on to data pivoting and we'll see advanced stuff like creating graphs, importing data from image, PDF, websites, etc. Forecasting the data in Excel using linear regression. We'll also use some advanced tools like solver and macros, which can make you a data pro. So now it's time to jump on to ribbon overview and see or learn how to navigate Excel at first place. The question here is, what is ribbon? From file to Acrobat, the collection of tab is a part of ribbon. Ribbon को you can say command center of Excel. ठीक है. So there are n number of tabs within ribbon. For example, home. This is where you'll find everything from font styling to cell formatting. For example, अगर मैं इस टेबल का एग्जांपल लूँ और लेट्स से मेरे को यहाँ पर मंथ, डेट एंड ईयर से इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैं सिंपली मोर फॉर्मेट्स पे आऊँगा एंड कस्टम के अंदर आकर के फॉर एग्जांपल डी डेमोन्स्ट्रेट्स डेट. ठीक है. सो डेट एंड मंथ को मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली टाइप में डी डी डैश एम 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 जो आप ऊपर देख पा रहे हो सैम्पल में, इस फॉर्मेट में ये सिंपली चेंज हो जाएगा. इवन इफ यू वांट, आप इसको सॉर्ट कर सकते हो एडिटिंग्स वाले सेक्शन पे आकर के. लेट्स से मेरे को ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट पे सॉर्ट करना है, तो मैं 2015 से 2025 तक की एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को सिंपली सॉर्ट कर पाऊंगा. नाउ मेरे को टेबल थोड़ा बेटर प्रेजेंटेबल बनाना है. मैं सिंपली इसके हेडर्स को कलर चेंज करना चाहता हूँ एंड मैं फॉन्ट साइज थोड़ा रिड्यूस करके लेट्स से कैलिब्री से किसी और फॉन्ट पे ले जाना चाह रहा हूँ, या मैं कैलिब्री पे ही कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ. यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है. और यहाँ पर सिंपली विद इन फॉन्ट आप मार्जिन्स ऐड कर सकते हो, बॉर्डर्स ऐड कर सकते हो. अगर आपको दो सेल्स को मर्ज करना है, यू कैन कम हेयर एंड मर्ज दीज. सो होम के अंदर आपको जनरली एस्थेटिक स्पेसिफिक चेंजेस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो. इवन अगर आपको फॉर्मेट जो है वो चेंज करना है या पेस्ट करना है फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और मेरे को बाकी सारे रोज जो हैं बोल्ड चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो क्लिपबोर्ड के अंदर, सॉरी कॉलम हेडर्स जो हैं, और ये ऐसे ड्रैग करोगे आप तो आपके लिए सारी कॉलम्स बोल्ड हो जाएंगे. सो दिस वाज अबाउट होम टैब. नाउ लेट्स जंप ऑन टू इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब के अंदर इफ यू वांट टू क्रिएट अ पिवट टेबल, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, चार्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अराउंड फॉर से मैप्स, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस एंड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, इंसर्ट करनी है, आप सिंपली insert tab का यूज कर सकते हो. So these are generally needed to add a table chart or even a spark line. Now comes draw. For those who love to sketch out ideas and create or convert, you know, drawings or something like that, उसके लिए ये ड्रॉ का सेक्शन यूज होता है. लेट्स से मेरे को अपना नेम लिखना है, आई एम नॉट दैट गुड विद ड्राइंग, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक ग्लिम्स. आप इसको यूज कर सकते हो. देन कम्स पेज लेआउट. पेज लेआउट में यू कैन सिंपली यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो पेज को, बट इफ यू वांट टू रिड्यूस द मार्जिन, आप बोलते हो कि मेरे को नैरो चाहिए या फिर ओरिएंटेशन मेरे को शिफ्ट करके लैंडस्केप पे चेंज करना है,
ऐसे changes आप कर सकते हो यहाँ पर. You can simply see you have received the dots, right? Then comes formula bar. This is a formulas tab. This is very important. यहाँ पर you can find almost all type of formulas or functions being utilized within Excel. So date and time का for example लेते हैं. इसके अंदर you will receive कौन से date time specific formulas को आप utilize कर सकते हो. Clicking on these will give you the entire syntax and related details. इसमें you can define formula names, auditings and other stuff, calculations के लिए कोई भी calculator या ऐसी चीज़ों का you can utilize it. Now comes data tab. For sorting and filtering to forecasting, everything you can do here. Solver, यहाँ पर you can see we were talking earlier that we'll look into this in later in the next video, wherein how we can use solver for forecasting problem or using some basic maths. Even if you want to extract data from from web or from database tables, you can utilize that. You'll find all those information within data tab. नाउ कम्स रिव्यू. सिंपली स्पेलिंग चेक्स करनी है या फिर वर्कबुक की स्टार्ट्स देखनी है. इस तरीके की सिंपलिस्टिक इंफॉर्मेशन को यू कैन फाइंड विद इन रिव्यू टैब. मेजरली इट्स यूज्ड फॉर प्रूफिंग कमेंट्स एंड प्रोटेक्शन फीचर्स. यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दोज हेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पेसिफिक रेंज को प्रोटेक्ट करना है या पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना है, यू कैन डू दैट. देन कम्स व्यू. View is very important and very frequently used for presenting your data. For example, ये table है यहाँ पर से if you want to remove these grid lines. Okay, these cells with gray lines are called grid lines. आप simply यहाँ पर आकर के grid line eliminate करोगे and you will get this white sheet. So इस तरीके की information you want to break a page और page layout change करना है, you want to zoom in, zoom out and other stuff, you can use views. Developer tab, more advanced है if you want to use VBA macros and this kind of stuff for any further development, या फिर you want to create a smaller application or tool with Excel. You can take an example of form. You can use developer tab. If you want a detailed video on this, because we are not covering developer section apart from macros in Excel with Excel series, if you want a dedicated video on that, drop down uh, a comment around this and we can help you out with it. Then come helps. Stuck. If you are stuck with some problem statement, if you are not able to solve some logic, you want to connect with community or you want to check for Excel blogs, you can simply do that. And then comes Acrobat. If you want to create a PDF shareable links or you want to convert your Excel file into PDF, you can simply click here and you can get that done. So this was all about ribbons. Now we will start picking up each functions which you can see here and we'll start solving it. And we'll take the example of employees table itself, which have joining date, employee ID, first name of the employee, last name, department, salary, month and year. And we'll solve different questions around it. So let's start with aggregation functions. These are very simple functions. Count of employees. What you can simply do is count. Every time you want to count a string, you can use count A. If it's an integer, you can simply click count and then select a range. मेरे लिए employee ID is B column, तो मैं B2 से B101 select कर लूँगा and enter. So I have received 100 counts for employees and let's see, second to 101. Yes, it's 100, right? Now come total salary, and here we need to sum the salaries, right? So F column is my salaries column. I can either click on F this way or I can select the area. You can use any of the way. To validate this, simply select this area and you will find here as well that Excel itself is giving you the sum of salary. You can look at this way as well. Maximum salary, the function is called max. सिंपली एफ एस टू एफ को सेलेक्ट कर लो आप मैक्स के साथ. सेल रेंज जैसे डिफाइन करना होता है विद इन मैक्स एंड यू विल गेट द मैक्सिमम सैलरी.
we are getting an error here. What this error is? Formula refers to empty cell. Yes. So this is incorrect, or you can say the output is not incorrect. What Excel is telling you is to select a specific range rather than selecting the entire column. So you can do this. The output remains same. It's just that कि आपको null values या फिर you can consider blank values या last में कहीं zero है. So to specify that, Excel is giving you this. Minimum के case में you can simply use sorry equals to min, open the parenthesis and then select the range. As simple as that. Average के लिए भी the similar approach will be used. You can simply write average and we are referencing to if column only, right? You can do that. And then comes first date when salary was paid, which means interviewer or company want to know minimum date from when they have started giving salaries. So you can simply write this. Okay. So now you will see very interesting stuff, which is you are getting a number rather than a date. What's happening here? So if you'll come here and see numbers, it's in general format. You just simply need to convert it into short date and you'll receive the shortest date, which is 19th May 2015, right? And this matches our first row. So this was about aggregation function. Now we'll start looking around logical function. So within logical function, हमारे पास विद इस टेबल के अंदर तीन क्वेश्चंस हैं टू सॉल्व फॉर. फर्स्ट वन, to create a flag where salary is greater than 20,000. Second is whether department is operations and salary is greater than 20,000 or not. We need to create a flag for that. And then either salary is greater than 20,000 और डिपार्टमेंट इज सेल्स. अगर मेरा दोनों में से एक भी कंडीशन मेट होता है देन वी कैन मार्क इट एज ट्रू. सो हमें फ्लैग्स बनाने हैं. लेट्स सिंपली क्रिएट अ फ्लैग फॉर सैलरी ग्रेटर देन 20,000. इट्स सिंपल. इफ ओपन अ पैरेंथेसिस, सेलेक्ट सैलरी कॉलम और सेल एंड देन उसमें आप सिंपली 20,000 का नंबर पुट कीजिए एंड देन वैल्यू इफ ट्रू. लॉजिकल टेस्ट में आप सिंपली अपनी कंडीशन डालते हैं. देन वैल्यू इफ ट्रू में हम ट्रू लेते हैं एंड वैल्यू इफ फॉल्स में हम फॉल्स ले लेते हैं अभी के लिए. सो अगर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 होती है देन द आउटपुट विल बी ट्रू. नहीं होती है देन आउटपुट विल बी फॉल्स. और इसको करने के बाद आप सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हैं. सो जहाँ पर मेरी सैलरी 12,000 थी वहाँ आई रिसीव्ड फॉल्स. जहाँ पर मेरी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 थी वहाँ पर आई हैव रिसीव्ड ट्रू. अब सेकेंड केस ऑपरेशंस, डिपार्टमेंट नेम शुड बी ऑपरेशंस विथ सैलरी ग्रेटर देन 30,000. सो यहाँ पर मेरा सिंपली इफ एंड का कंडीशन लगेगा. सो इक्वल्स टू इफ ओपन द पैरेंथेसिस राइट एंड देन अगेन ओपन द पैरेंथेसिस. अब इसमें मेरी दो लॉजिक्स जाने हैं वेर इन फर्स्ट लॉजिक इज डिपार्टमेंट इक्वल्स टू ऑपरेशंस. ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा, डबल कोट्स के अंदर होगा. एंड देन सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000. मेरे दोनों के दोनों कंडीशंस होंगे सही तभी आई विल रिसीव ट्रू, एल्स आई विल रिसीव फॉल्स. सो अगर आप देखो यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट सपोर्ट है, सैलरी भले ग्रेटर देन 30,000 है बट डिपार्टमेंट इज नॉट ऑपरेशंस. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स एज आउटपुट. सो यहाँ पर वी हैव मेड सम मिस्टेक. हमने ऑपरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी. ऑपरेशंस राइट एंड देन लेट्स रन दिस. अब अगर आप देखो तो जहाँ पर मेरे पास रो 5 में my department was operations and my salary was 77,000, so I received true as the output.
सिमिलरली इफ और के केस में एंड को हम और से रिप्लेस कर देंगे, एंड डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू सेल्स, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ग्रेटर देन है, इफ यू वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपली आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा सकते हो, एंड नॉट इक्वल्स टू के केस में दिस इज दी सिंटेक्स। सो अभी के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000, देन कॉमा, पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद कॉमा, एंड अगर मेरा दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है देन आई विल रिसीव द आउटपुट, राइट। सो यहाँ पर इफ यू विल सी सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 बट डिपार्टमेंट इज नॉट सेल्स, स्टिल वी आर गेटिंग ट्रू एज आउटपुट। वैलिडेट करने के लिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर आप होम पर आकर के सिंपली यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। एंड लेट्स चेक किन किन केसेस में हमारी लॉजिक ने हमें फॉल्स आउटपुट दिए। हमें क्या देखना है कि इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट मेरा सेल्स नहीं होना चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर देन 20,000 नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट सैलरी मेरे पास 19,484 है, एंड मेरा डिपार्टमेंट जो है admin, finance, HR, operations, and support है, which means sales नहीं। So our logic is working fine. So this was about if and if or। अब साइड में we have table जहां पर हमने count of employees, total salaries and average salary calculate कर रखी है। To make this simpler for you, अभी हम इसको एलिमिनेट करते हैं या डिलीट करते हैं, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। जहां पर मेरा काउंट ऑफ एम्प्लॉय जो है दैट इज count ifs, not count if। why we have used if and if और ifs के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखते हैं। सो अगर आप if फंक्शन यूज करते हो तो आपके पास एक रेंज एंड उसकी क्राइटेरिया आती है, बट हमारे केस में हमें दो रेंजेस चाहिए एंड उनकी क्राइटेरिया चाहिए, विच इज मंथ एंड ईयर, राइट। सो हम सिंपली यहाँ पर काउंट इफ्स, जहां पर मेरा मंथ का काउंट जो है वो मंथ के इक्वल हो एंड ईयर का काउंट ईयर के इक्वल हो। सो इफ यू सी हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं एंड दिस टाइम हमने डॉलर्स लगा रखे हैं। व्हाट आर दीज डॉलर्स फॉर? सो डॉलर का जो साइन होता है एक्सेल में, ये कॉलम्स को फ्रीज करने के लिए होता है, सेल रेफरेंसेस को फ्रीज करने के लिए होता है। यहाँ पर हमने क्या बोला है, जी इज टू जी को फ्रीज कर दो, विच मीन्स कि अगर आप इसको यहाँ से उठा करके शिफ्ट करोगे सेकेंड में तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ सम इफ्स के केस में क्या होगा, सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सम इफ्स में हमारे पास सबसे पहले क्राइटेरिया रेंजेस जो हमने डाले थे काउंटर्स में, उसके साथ साथ हमें सम रेंज सेलेक्ट करनी होती है। एंड अगेन उसको लेट्स लॉग दिस आउच, आई गेस मैंने मिस्टेकनली काउंट ऑफ एम्प्लॉयज की जगह टोटल सैलरीज की जगह काउंट ऑफ एम्प्लॉयज में को ऐड कर दिया। सो यहाँ पर हम सिंपली इसको चेंज कर देते हैं। एफ कॉलम इज माई सैलरी कॉलम, राइट, एंड इसको यहाँ से हटाते हैं एंड इसको लॉक कर देते हैं। नाउ इट्स गिविंग मी यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज मैंने काउंट इफ्स ले रखा है, हमें सम इफ्स चाहिए, राइट। सम इफ्स का सिंटेक्स इज सम रेंज देन क्राइटेरिया रेंज 1 एंड देन आर क्राइटेरिया अगेन क्राइटेरिया रेंज 2 एंड देन आर क्राइटेरिया। और ये हमें बार बार एरर इसलिए मिल रहा है बिकॉज हमने एंटायर रेंज सेलेक्ट कर रखी है। हो सकता है उसमें नल वैल्यूज भी हों एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स, फॉर एग्जाम्पल जीरो नल वैल्यू या फिर स्ट्रिंग भी आ सकता है। सो व्हाट एक्सेल इज रिकमेंडिंग इज कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग आप जितने जो रेंजेस आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में 1 से 101 है,
सो हमें वही सेलेक्ट करना चाहिए, 12101, 12101, एंड देन अगेन 12101। और अगर अब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके एरर्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए। Okay, we are still getting some error. Let's see what that error is. Formula refers to empty cell because हमने ओके हमने सिंगल रेफरेंसेस को लॉक किया था, हमें इंटायर करना है। सो डॉलर्स का रोल प्ले ऐसे होता है कि जब आप इंटायर सेल्स पे कोई मूवमेंट नहीं चाहते हो देन आप इसको इस तरीके से लॉक करते हो, वेरन आप लेट्स से कॉलम लेवल लॉक करने के लिए आप कॉलम के आगे डॉलर साइन लगाते हो, रो लेवल लॉक करने के लिए आप रो नंबर के आगे लगाते हो। सो इसीलिए वी वर रिसीविंग एरर्स बिकॉज अभी के लिए मैं इसमें एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ। नाउ हमारे पास ये सारे ही 101 तक फ्रीज हो गए। बिफोर दिस वी वर गेटिंग वैल्यूज और रेंजेस प्री 101 और लाइक सॉरी पोस्ट 101, 102, 103 भी आ रहा था इसी। नाउ कम्स एवरेजेस। एवरेजेस भी एग्जैक्टली सेम अप्रोच होती है, बस आपको सम इफ्स को एवरेज से चेंज करना होता है। एवरेज रेंज rather than performing sum on sum range, average ifs के केस में वो एवरेज परफॉर्म करता है and then your month reference and year reference, then come back to home and reduce the decimal places, and now you receive total salary, average salary and count of employees, and simply to validate this आप this upon this कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा आपके पास exactly average क्या है, right? Now if you'll notice यहाँ पर एक माइनस साइन है। व्हाट दिस माइनस एंड प्लस साइन इज अबाउट, दिस इज अबाउट ग्रुपिंग कॉलम्स। सो लेट्स से जब मैं बिजनेस यूजर के साथ या किसी के साथ एक मीटिंग में हूँ अपनी टीम के साथ एंड आई वांट टू शो ओनली टेबल ऑन विच आई हैव रन द कैलकुलेशन, नॉट द इंटायर डेटा, तो मैं सिंपली ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, लेफ्ट क्लिक करिए एंड देन यू विल रिसीव दिस, एंड विद इन मेन्यूज सर्च फॉर ग्रुप। ग्रुप सिलेक्शन में वंस यू क्लिक ऑन ग्रुप सिलेक्शन आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ क्लिकिंग ऑन प्लस माइनस यू कैन एक्सपैंड और कोलैप्स द कॉलम। नाउ लेट्स जंप ऑन टू लुकअप। सो लुकअप आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस wherein आप इसको बहुत frequently when you are acting as a data analyst or working as a data analyst or a scientist, या फिर you are working on some sort of analysis as a business individual, you use VLOOKUP or HLOOKUP very frequently. So for example हमारा जो historical data था employee table में, if we'll see here, so यहाँ पर अगर मैं लुकअप की बात करूँ तो मेरे पास 100 एम्प्लॉय आईडीज हैं, बट आउट ऑफ दोज 100 मेरे को सिर्फ इन 7 के अगेंस्ट में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल राइट वी लुकअप, ओपन द पैरेंथेसिस, आई विल सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू किसके अगेंस्ट में मुझे ये चाहिए, विच इज अगेन A3, एंड देन मेरे को रेंज सेलेक्ट करना है कि किस पर्टिकुलर रेंज से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। सो मैं B1 से D101 तक में मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, and then which value I want the second value. First is B, second is the first name, and then 0. And that's how you'll receive the first name. और लास्ट नेम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेम कॉपी करके पेस्ट कीजिए एंड सेकेंड को रिप्लेस कर दीजिए थर्ड से। सो इफ यू सी हेयर B, C, and D. B is our reference point, C is second from the reference point, and D is the third from the reference point.
सो यहाँ पर लुकअप वैल्यू के केस में भी हमने सिमिलर चीज करी है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल को बताया कि आपको किसके अगेंस्ट में वैल्यू देखना है, किस रेंज में देखना है, एंड देन वो कौन सी पोजिशन पे, इट्स इन सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द रेंज, एंड देन 0 और 1 is true means approximate match and false means exact match. 0 is exact match, 1 is approximate match. So either you can write false or you can write 1 or 0. It's somewhat similar. Now comes H lookup. H lookup के केस में let's say we have a table named जिसमें हमारे पास subject and students के name के against में उनकी marks mentioned है, बट मेरे को स्पेसिफिकली बॉब एंड डेविड इन दो स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और मैथ्स की मार्क्स लेने। सो हाउ आई कैन फिच दिस, आई विल अप्लाई एच लुकअप, देन लुकअप वैल्यू, देन आई विल चेक फॉर टेबल एरे कि मेरे को किस से किस पर्टिकुलर रेंज तक में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। रो इंडेक्स नंबर इज व्हाट इट्स आस्किंग फॉर। सो रो इंडेक्स नंबर इज बॉब इज फर्स्ट, इंग्लिश इज सेकंड, हिंदी इज थर्ड, राइट। सो मैंने यहाँ पर थर्ड इसीलिए मेंशन कर रखा है। यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एंड पुट इट हेयर, एंड देन एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट मैच, मेरे को यहाँ पर भी एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर मैंने डॉलर इन द मिडल ऑफ F7 लगाया हुआ है, विच मीन्स कि मेरे को रो लेवल पे लॉक करना था, ना कि कॉलम लेवल पे, एंड दैट्स वेयर मैं F से G कॉलम पे शिफ्ट कर पाया, बट मेरा रो रिमेन्स द सेम, राइट। एंड लेट्स वैलिडेट दिस। बॉब के लिए हिंदी इज 83 एंड डेविड के लिए इट्स 91, maths is 95 and David के लिए that number is 80, right? So that's how H lookup and V lookup works. Now let's jump on to text function. So within text functions we have trim, clean, upper, proper, lower, left, right. Okay, so let's understand each of them one by one. Len is not text specific function. We have kept here to understand if there is anything extra space is there or any special characters are there. For example, in Robert, it's of 6 characters, right? But we have received 7. That means there is some extra characters available. So let's simply apply trim here, and if you will now see a len of this, you will receive 6, right? So there might be a scenario that okay, there is extra space. So trim, generally working of trim is also to remove extra space from uh, the text. So the difference between trim and clean is clean generally removes special characters which are not visible. For example, if you are copy pasting the data from database, then there might be some sort of colon or something like that which gets pasted in your Excel cell. So to remove that, you can use clean function. The syntax is very simple. You can simply apply clean and then select the cell value and then apply it. So this will clear your entire text cell input. And in trim आप simply trim and then cell reference को use कर सकते हो, कोई भी extra space trim will clean that. देन लेट्स से अगर आपको अपने सेल वैल्यूज या टेक्स्ट को अपर यानी कैपिटल में शिफ्ट करना है, देन यू कैन सिंपली राइट अपर, सेलेक्ट द रेंज एंड अप्लाई इट, और ये आपके लिए कंप्लीटली अपर केस में शिफ्ट कर देगा। प्रॉपर इज shifting the text in proper case means the first alphabet in capital and remaining in small. So इसके लिए you can simply apply proper and upper पे we can simply apply and see कि this is how it's working, कि मेरी capital को इसने proper case में कर दिया। And if you want to remove the string into completely lower case, then in that case you can write lower and then select a cell reference within the parenthesis and drag drop it. Now left and right. What is the usage of left and right function? So left function is generally used to extract
number of characters or alphabet from a name or a specific, maybe text value. For example, if I want to see what is the first alphabet, or I want to extract the first alphabet from G column, then in that case, I can write left and then apply this, and then number of characters I want to extract. I only want to extract the first character. I'll write one and then close the parenthesis and apply enter, and then simply drag it by double clicking on the bottom side of the cell. Then in right, the syntax is same. What you can do is you can apply right, and then, sorry, for this we'll need G, right? And from G we wanted to understand the last character with from the name. So you can simply apply right and then select the cell and number of character you want to extract. If you want to extract the last three characters, you can write three. If you want to extract all 5 or 10 or 11 characters, you can simply write that number. This will help you out extracting the characters from a name, from the name. Yeah. Now come date function. So these are dates, and I have to extract year, month, day, weekday, and quarter from this, from one date. What all functions we'll need, we'll see here. So years को extract करने के लिए you can simply write year, open the parenthesis, select the reference, and close the parenthesis, and apply enter. Double click करो आप और you'll get all the years populated in your cell. Month के लिए it's same. Just replace year with month. Same for day. Write day and select the reference. Now weekday. What is the difference between day and weekday? Day is which exact date you are in, and weekday is either it's Sunday, Monday, Tuesday, or Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and so on. So now if you have to extract weekday, the function is weekday, then select the reference, type comma. So for different company or for different purpose, you have weekdays defined separately, right? In some cases, people consider Sunday to Saturday as a week. In some cases, people consider Monday to Sunday as a week. So you can simply apply these numbers written on the first. Like if you will type one, you will get a weekday based on Sunday to Saturday. For example, 19th May 2015 is Tuesday. If you will apply one, you'll get three as a output. And if you will apply two, wherein considering Monday as the first day of the week, you will get 2 as the output. Simply to validate that, what we can do is we can, let's check in 2015 May, right? On May 25th, 19th May 2015 is Tuesday. So that's how you can compute this. For quarter, there is no specific function of quarter. What you can do is you can simply divide the number of months by 3 and round up to 0. This will give you the quarter number, and then you can use function called concatenation or concatenate. Within inverted commas, write q, then apply comma, and then you can simply close the parenthesis, and you will receive the quarter. So this quarter is based on calendar year.